Good morning, students. I, Shifali, from Dips Bloomingdale's. Today we will start our Unit 6 Myths and Legends. Firstly, we will know the meaning of myths and legends. Myths are the imaginary stories which the person create themselves, and legends are the persons who have supernatural powers. Let's start with our story. The story is about the king Minos who wanted to create a labyrinth. Let's start the chapter. Narration. On the island of Crete, during the age of King Minos, there lived a man named Daedalus and his young son Icarus. What does it means? कि क्रेट का जो आइलैंड है, किंग माइनोस के टाइम पर देयर लिव्ड अ पर्सन जिसका नाम क्या था? डेडुलस, और उसका जो छोटा बेटा था whose name is Icarus. Daedalus had a special talent for inventing strange and wonderful mechanical creations. जो Daedalus था, he had an special talent that he could make very strange and wonderful machines. One day, King Minos summoned Daedalus. That one day, King Minos told his soldiers to summon Daedalus. कि वो उसने अपने सैनिकों को बोला कि डेडुलस को उसके पास लेकर आए. What did he said to Daedalus? I want you to invent a labyrinth to hold the Minotaur, a half man and half bull monster, destroying my city. What did he say to Daedalus? That he wanted him to invent a labyrinth. Now, what is labyrinth? A maze. That means a tricky way. He wanted Daedalus to make a labyrinth for Minotaur, who was a half man and a half bull monster. कि एक ऐसा राक्षस था जो आधा आदमी और आधा बैल था, और वो उसकी सिटी को यानी कि माइनोस की जो सिटी थी उसे बर्बाद कर रहा था. इसलिए वो चाहता था कि वो उसके लिए एक लाbyrinth बनवाए डेडुलस से. Daedalus worked day and night and designed a huge labyrinth. जो डेडुलस था उसने दिन रात मेहनत की और एक बहुत बड़ा labyrinth बना दिया. I am pleased with your work, Daedalus. तो उसने आगे से क्या बोला कि मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हुआ. I want you and your son to work for me for your entire life. कि मैं क्या चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा बेटा अब पूरी लाइफ मेरे लिए काम करें. Henceforth you are forbidden to leave this tower. तो जिस टावर में बैठकर रहकर उन्होंने ये लैबोरेंथ बनाया था, तो उन्होंने क्या बोला कि अब तुम उसमें से बाहर नहीं आ सकते. I will be providing you everything you will ask for the inventions. तुम मेरे लिए नई नई इन्वेंशंस करते रहो और उन इन्वेंशंस के लिए तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊँगा. This is not so bad. What did Daedalus think? कि that was not a bad deal. I should live here. I can build whatever I want and the king will provide us with anything we wish for. That by living here in this tower, I can build anything, whatever I want to make. And the things which we were needed to make that thing
दैट ऑल थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द किंग, कि मैं कुछ भी मांगूंगा उस चीज़ के लिए तो वो राजा मुझे प्रोवाइड कर देगा. आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ लिविंग इन द टार, Iroquois could not take it more. He broke into a rage. So Daedalus went to the king. कि बहुत सालों तक उस टावर में रहने के बाद जो इरुकस है वो इसको और ज़्यादा सहन नहीं कर सका और वो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता था. इसलिए डिडुलस किंग के पास गया. नाउ what did he say to king and what the king replied, that we will read tomorrow. I hope till now the chapter is clear to you. We'll continue tomorrow with the same chapter. Till then, take care. Have a nice day.